Hello students, welcome to the class 11th Microeconomics chapter 2nd Consumers Equilibrium, in which we have already discussed about the consumers equilibrium in case of single commodity. Today we will discuss the consumers equilibrium in case of two commodities. The consumers equilibrium, consumer can attain the equilibrium situation in case of two commodities can be ascertained, can be considered with the help of two conditions. Number one case is when the price of each commodity is the same and when the price of two commodities are different. Today we will consider the consumer's equilibrium when the price of both the goods are same. So while we are going to consider the consumer's equilibrium when price of each commodity is the same, we have to consider two things, two conditions, that is marginal utility of X must be equal to marginal utility of Y and it must be equal to marginal utility of money. कहने का मतलब पहली कमोडिटी से उसको जितनी मार्जिनल यूटिलिटी, जितने यूटिल्स का गेन हो रहा है उतना ही मार्जिनल यूटिलिटी उसको दूसरी कमोडिटी को कंज्यूम करने से होगा और उतनी ही यूटिलिटी उससे अपना पैसा जो उसके पास है उसको खर्च करने से उसको मिलेगा। तीनों चीज पहला कंडीशन है सेम होना चाहिए और दूसरा कंडीशन है कि मार्जिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट्स। द सेकंड कंडीशन इज हियर आल्सो द लॉ ऑफ diminishing marginal utility will be in consideration. Now, let us consider the consumer's equilibrium when price of each commodity is the same. Then we have, it must satisfy these two situations. First one, MUX must be equal to MUY, must be equal to MUM, and second condition, law of DMU must operates. Now take an assumptions. Here price of 1 unit of each good is ₹1. For preparing the schedule, for considering the consumer's equilibrium, we can prove it with the help of schedule and diagram. But before considering the schedule, preparing the schedule and diagram, we have to consider certain assumptions. On which assumptions these schedules has been prepared. First, price of 1 unit of each good is ₹1. यानी कि कमोडिटी X और कमोडिटी Y दोनों की एक एक यूनिट की जो प्राइस है वह ₹1 ही रहेगी, ₹1 प्रति यूनिट। सेकंड एजम्पशन, मनी इनकम ऑफ ए कंज्यूमर इज ₹5। जो कंज्यूमर का इनकम है वह उसके पास मात्र ₹5 ही है। वह अपने इस ₹5 को X और Y कमोडिटी को परचेज करने के लिए किस कदर खर्च करेगा कि उसको सबसे अधिक मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम यूटिलिटी गेन होगा, वहीं पर वो ₹5 अपना खर्च करेगा। कंज्यूमर का बिहेवियर तो हम जानते ही हैं, पैसा अपना वहीं खर्च करेगा जहां पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। Now consider here in the first table units consumed, marginal utility of X, marginal utility of Y. Now if the consumer is spending his ₹5 one by one, then on which commodity the consumer will spend his money income? से ये कंडीशन है, अगर वह 1 यूनिट
12 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिलता है, y का खरीदता है तो 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो किसको खरीदेगा वो? नेचुरली x को खरीदेगा। पहला रुपया हुआ यहां पे खर्च करेगा, दूसरा रुपया वो कहां खर्च करेगा? y पर खर्च करेगा। इसको 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिलेगा, लेकिन 10 यूटिल्स का उसको x पे भी सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, लेकिन यहां पर वो खर्च नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वह x की 1 यूनिट कंज्यूम कर चुका है, वह y का करना चाहेगा। और फिर तीसरा रुपया वह जब खर्च करना चाहेगा तो वह किस पर खर्च करेगा? x कमोडिटी को परचेज करने के लिए। ये तीसरा रुपया है उसका, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर तीसरा रुपया वो y पर खर्च करता है तो उसको 8 यूनिट्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, और x पे खर्चता है तो 10 यूनिट्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। और चौथा रुपया हुआ नेचुरली y पर खर्च करेगा, क्योंकि 8 यूनिट्स का सेटिस्फैक्शन है और x पर भी 8 यूनिट्स उसके पास ऑप्शन है खर्च करने का, लेकिन x का ऑलरेडी 2 वह कंज्यूम कर चुका है, y का एक ही कंज्यूम किया है, इसलिए चौथा रुपया वह यहां पर खर्च करना चाहेगा। और पांचवा रुपया जो लास्ट है ऑटोमेटिकली x पर खर्च करना चाहेगा, क्योंकि 8 यूनिट्स का सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ये सारे सेटिस्फैक्शन को आप जोड़ दीजिए, 12 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 8 कितना होगा? 20, 40, 48 हुआ। In this table, the consumer is going to consume the first unit of commodity X because he is getting maximum units of satisfaction by spending 1 rupee in the purchasing of commodity. The second rupee will be spent on purchasing of Y unit, 1 unit, Y commodity, because he has already consumed the X commodities 1 unit, so he will prefer to consume another type of goods, and he is getting 10 units of satisfaction. The third rupee will be spent on the purchasing of X commodity because he has already consumed X commodity as well as Y commodity. Then again he will purchase X commodity because if he is spending third rupee on the Y commodity, he will get 8 units of satisfaction. But if he is going to spend third rupee on X commodity, then he will get 10 units of satisfaction. That is why he will prefer to spend his third rupee on purchasing the X commodity. And next, as he has consumed 2 units of X commodity and he has consumed only 1 unit of Y commodity, then the fourth rupee he will prefer to spend on Y commodity because on spending 4 rupee on Y commodity he is getting 8 units of satisfaction. In this way he has consumed 2 units of X and 2 units of Y. Now he has left 1 rupee, last 5th rupee, on which commodity he will spend that last rupee? Naturally on commodity X, because he is getting maximum units of satisfaction by spending 5th rupee on the commodity X. That is why he will spend last rupee on purchasing X commodity.
In this way, he has spent his total income 5 rupees on the purchasing of these two commodities, and in this way he has purchased 3 units of X commodity and 2 units of Y commodity. For getting his maximum satisfaction, and if he is going to prefer or spend his money income any other combinations in this table, he will never get more than 48 utils of satisfaction. You may adjoin it and may consider. इसके अलावा किसी भी तरीके से वह अपने रुपए को इसमें खर्च करता है, एक एक करके वह 48 यूटिल्स से ज्यादा सेटिस्फैक्शन कहीं नहीं पाता, हमेशा इससे कम ही यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन पाएगा, इसलिए वह उसको सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन इस कॉम्बिनेशन पर मिलेगा। अब आइए देखते हैं इसी को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। इस तरह से हमने टेबुलर प्रेजेंटेशन प्रूव कर दिया कि वो अपना 5 रुपया कैसे खर्च करेगा और कितनी कमोडिटी एक्स की खरीदेगा, कितनी कमोडिटी वह वाई की खरीदेगा कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो इस तरह हमने पाया 3 पर एक्स की और 2 वाई की परचेज करेगा तो उसको वह इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा क्योंकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। Now come to the graphical presentation. Here on the first y-axis, this is the y-axis, this is the x-axis, this is also y-axis. In the same graph, both the utilities are considered. On first y-axis, we are considering the marginal utility of x 2, 4, 6, 8, 10, 12 in 2, and on the y-axis marginal utility of y, that is 2, 4, 6, 8, 10 and 12. And on the x-axis, first from leftward to rightward we are considering 1, 2, 3, 4, 5 the units consumed. This is the units consumed. Here you may write units consumed, and these are the utilities. In utils, how much utils the consumer has got. Now the consumer is spending first rupee on the purchasing of X commodity. Here first unit X commodity 12 utils of satisfaction. Second rupee on the second commodity 10 utils of satisfaction. Second commodity 10 utils of satisfaction. Then third unit 8 utils of satisfaction. Third unit, this is the 8 utils of satisfaction. 8 X का देख रहे हैं, and fourth unit 6 utils of satisfaction. Fourth unit 6 utils of satisfaction, and fifth unit 4 utils of satisfaction. You can join this line in this way. Likewise, first unit 10 utils of satisfaction. 10, 1, this is 1, here 1, 2, this is 2, 3, the 3, 4, and you may join it in this way. You can get the two lines of utility, marginal utility are intersecting here, and the consumer is getting its
equilibrium, and by consuming 3 units of commodity X and 2 units of commodity Y. In this way, we have proved that in case of 2 commodities, the consumer will attain its equilibrium by spending his 5 rupees on purchasing of 2 commodities. He will purchase 3 units of X commodity and 2 units of Y commodity. Then only he will get maximum satisfaction, total utility. In this way, consumer will attain its equilibrium. In the next class, we will consider the consumer's equilibrium in when price of 2 commodities are different. Today, the price of both the commodities are same, rupee 1. We have considered. In the next class, we will consider when the price of X is different and Y is different. Residual, thank you.